In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का वाई जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि आप जो भी कुछ कहेंगे वो कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। whatever जो भी कुछ, whatever you say will be recorded for proceedings. प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, अदालती कार्रवाई। नंबर 2, उसने जो भी तरीका आजमाया उसे नाकामी मिली। whichever method he tried, whichever method he tried he met a failure. उसे नाकामी मिली। नंबर 3, हम जब कभी भी उनसे मिलने गए हमने उनको, थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, हमने उनको अखबार पढ़ने में मसरूफ़ पाया। whenever we went to see him, we found him busy. In what? In reading newspaper. Newspaper. Or paper also. Only paper. Number 4, वो जहाँ कहीं भी हैं हम उनको ढूंढ निकालेंगे। wherever they are. Wherever they are, we will find them out. Number 5, वो जो कोई भी हैं उनको कवानीन की ताबेदारी करनी चाहिए। whoever they are. वो जो भी कोई हैं, they should obey the laws. Number 6, जो भी कोई यहाँ पर आता है वो इस जगह को सुकून वाली पाता है। whoever comes here, जो भी कोई यहाँ पे आता है वो इस जगह को सुकून वाली पाता है। find this place comfortable. finds this place comfortable. Okay. Then number 7, वो कितनी भी सख्त कोशिश कर लें हमें शिकस्त नहीं दे सकते। however hard they may try,
however hard they may try, they cannot defeat us. They cannot defeat us. वो हमें शिकस्त नहीं दे सकते. नंबर 8, वो कई बार वो कई बार नाकाम हुआ, अलबत्ता वो कभी भी दिल शिकस्ता नहीं हुआ. He failed many times. However, अलबत्ता however के लिए भी यूज़ होता है. However, he did not lose his heart. नंबर 9, जिस किसी पे भी उसने एतमाद किया उसे धोखा मिला. Whomever he trusted. He was deceived. This is passive voice. They deceived him. Or whomever he trusted. जिस किसी को भी, he or she deceived him. He was deceived. This is passive voice. Number 10. आप जिस किसी को भी धोखा देते हो, अपने आप को धोखा देते हो. Whomever you deceive, you deceive yourself. आप जिस किसी को भी धोखा देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो. I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.